welcome today, this hour of worship. As we worship the Lord today, our theme is Pentecost, the coming of the Holy Spirit. We can say the gift of the Holy Spirit. आप सबका आराधना में स्वागत है और आज के दिन हमारा विषय रहेगा प्रार्थना करने का, जिसे ईद नजूर कहते हैं या पवित्र आत्मा का उतरना आज के दिन मनाया जाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us give thanks to the Lord as we worship, as Romans chapter 5 verse 5 says, God's love has been poured out upon us through the Holy Spirit that has been given to us. रूल कुद्दूस के वसीले से जो हमको बख्शा गया है, खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। And as we worship the Lord, let us see today the Lord as He reminds us in our prayer, in our intercession, in our confession, and listening to the Word, and our singing, in our prayers, that the Holy Spirit would work into the lives of the people. आज हमारी आराधना में, हमारी दुआओं में, हमारे आज के पश्चाताप में, हमारे विश्वास का अंगीकार करने में और वचन सुनने में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पे उतरे जाए, हम सब पे उतरे और हम सब आशीषमय हो और प्रभु यीशु मसीह बने। Let us continue as we worship the Lord, as we celebrate the Pentecost. Let us all look to the Lord in prayer. Almighty God, who on this day enlightened the hearts of your faithful people by the gift of the Holy Spirit, grant that the same Spirit may guide us by His wisdom in all that we think and do, and ever uphold us in the truth by His mighty power. Through the merits of the Christ Jesus our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, the one God, now, forever and ever. Amen. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार हमारे विश्वास लोगों के प्रदान किया और यूं उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों का हमारा मार्गदर्शन करे, अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्यों के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आए खुदा, तू जो गोया इस वक्त हमारे ईमानदार बंदों पर अपने रूल कुदूस का नूर भेजकर उनके दिलों को तालीम दी, ये इनायत कर कि हम उसी रूह की तासीर से सब बातों से सही तमीज रखें और उसकी पाक तसल्ली से हमेशा खुशी करते रहें।
ये हमारे मुंजी यीशु मसीह के सबाब की बदौलत हो, जो तेरे साथ उसी के रूह की गांधी में अब्दुल अब्बास जीता और सल्तनत करता है। आमीन। The responsive reading has been taken from the book of Psalm, chapter 139, verses 1 to 4, 7 to 8, 11, 12, 23, and 24. Please respond by saying, "Thy right hand shall hold me." O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in grave, you are there. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night, even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for darkness is as light with you. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The New Testament reading is taken from the Acts of the Apostles, chapter 2, verses 1 to 11. This reading is from the New International Version Bible. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under the heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in his own tongues." मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, पहले पद से 11वें पद तक। प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, पहले पद से 11वें पद तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे,
देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपुद्वीकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Today's Bible reading has been taken from Paul's first letter to the Corinthians, chapter 12, verse 1, and verses 4 to 13 from today's English version. Now, concerning what he wrote about the gifts from the Holy Spirit, I want you to know the truth about them, my brothers. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, but the same Lord is served. There are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all for their particular service. The Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. The Spirit gives one person a message full of wisdom, while to another person the same Spirit gives a message full of knowledge. One and the same Spirit gives faith to one person, while to another person he gives the power to heal. The Spirit gives one person the power to work miracles, to another the gift of speaking God's message, and yet to another the ability to tell the difference between gifts that come from the Spirit and those that do not. To one person he gives the ability to speak in strange tongues, and to another he gives the ability to explain what is said. But it is one and the same Spirit who does all this as he wishes. He gives a different gift to each person. Christ is like a single body, which has many parts. It is still one body, even though it is made up of different parts. In the same way, all of us, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free, have been baptized into the one body by the same Spirit, and we have all been given the one Spirit to drink. This is the word of the Lord. Please respond by saying, Thanks be to God. आज का दूसरा पाठ लिया गया है पहली कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत और उसकी चौथी आयत से लेकर 13वीं आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े
और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। The Gospel reading has been taken from the Gospel according to John, chapter 20, verses 19 to 23. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Intercede to God, and please respond by saying, "Hear our prayer," when I say, "Lord, in your mercy." In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world.
and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayers. For all who live in this place or city, town, village, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayers. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, hear our prayer. हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, आप सब बोले, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवों, विशेष करके हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड टिमोथी शॉ, रेवरेंड अरविंद पीटर, हमारे ले रीडर आशीष और अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। Let us say all together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us say, Amen.
The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. On the third day, God created all kinds of plants and trees. And on the sixth day, God created all kinds of animals. And God saw that it was good. Thank you. Purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, then brighten up the sky. Then God said, "Let there be light in the sky."
Let's look to Lord in prayer as we hear the word of God. That the Spirit of the Lord may come upon us, that we may remain faithful till He comes back in glory again. आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को अपने आप को सुपुर्द करें और विश्वास योग्य बने जब तक वो वापस नहीं आता। प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह, हम वचन की ओर देखते हैं। Lord, as we look upon to the word, that we look to ourselves, not our will, Lord, let your will take place as we listen to your word, and let your Spirit may dwell among us. In Jesus' name we pray. Amen. Today, Pentecost is such an important event in the life of Jesus Christ. His birth, His death, His resurrection, His ascension, His pouring of the Holy Spirit, and then waiting for coming back to take away His church, His bride, and then be with Him forever. And the day of Pentecost, the scripture says that we just read to us the prophecies in the scripture. We'll try to understand today further. As a Christian, do we know about Pentecost? What is it all about? Today we'll try to understand how Pentecost is important, and a very important, like death, like resurrection and ascension, and as Pentecost also into our life. It's very important. Because if Pentecost hasn't come in the life of the church, the very resurrection and death of Jesus Christ and His birth of Jesus Christ, which has been prophesied, goes in vain. So the Pentecost is very, very important. It fulfills the prophetic understanding, which fulfills people, that empowers people, and that gives assured hope to the people. The working of the Holy Spirit, that celebration of the Pentecost, is so important for renewal and growth of our Christian walk of life. So first we just see first thing that the scripture reminds us today, the word Pentecost is basically a numerical word in Greek. In a Jewish and Christian literature, it was referred to as a 50th day. It is called Pentecost, means the 50th day. It refers, especially when you look to this from the biblical perspective, we see the 50th refers to the celebration of Pentecost on the 50th day, the celebration of Pentecost. Now these references which talks about it are given in the scripture in Exodus chapter 23 verse 15 and from verse 15, 16 to 21. It talks about something related to them. It takes about that how they celebrated over there, and how the people of Israel continue to grow into His likeness. And that's very important. And this is a kind of a prophecies that were there given to us, and we were called to believe. Exodus chapter 23, verse 15. You shall observe the feast of unleavened bread. For 7 days you will eat unleavened bread, as I commanded you, appointed you in the month of Abib. Now you may imagine, month of Abib is talking about month of April that we have, and that's their January, according to the Jewish calendar. The day they came out of Egypt. And from there to the third month, the celebration start of the Pentecost. So you shall observe the feast of harvest, of the first fruit of your labor, from what you sow in the field. Also the feast of ungathering at the end of the year. That's it. After 6 months. And then when you gather in the fruits of your labor from the field. These are the things that involve the first fruit of your labor that you will have, and that you celebrate and give thanks to the Lord. Very important. Pentecost is considered as one of the major Jewish feast festivals, not only of harvest or the first fruit of the wheat harvest, which were presented to Yahweh. That was very important. And it was celebrated for 7 weeks, as we just read, and goes on till the beginning of the barley harvest when it starts. That was later on called the Feast of the Weeks. But eventually, the Jewish thinking about the Pentecost, they usually start thinking not only this, but they also celebrated the Feast of the Covenant Renewal. Pentecost was also celebrated by the Jewish community as a feast of the covenant. It refers something related to,
that links the covenant that they received at Sinai, and they celebrate, which is in the third month, which you just read in Exodus chapter 19 and verse 2. And that is also referred in 2 Chronicle chapter 15:10, that at that time they came at the Sinai and received the covenant. It also make into belief further that the Pentecost was also celebrated according to Rabbinic Judaism, and they initiated these two things together, harvest and giving of the law and a celebration of the covenant. It also associated with them the law in a various form. One of the Jewish rabbi, who was a little bit of heretic later on, but who died in AD 279, he referred Pentecost, something that the giving of the law in a various form at the Mount Sinai. He believed the one voice that came from Sinai, and from Sinai divided the same voices into 7 languages, and later into 70 languages, and a nation of different languages of the world. So he believed, it's a legend that he believed that on the day that the people of Israel were in Sinai, what God gave the covenant, what God spoke over there, it developed into many, many languages. Now that's legendary. We don't have to bother about that. But some people have thought thinking. There is no documentary evidence of link with this Pentecost and Sinai till 2nd AD. So what we understand over here, the word Pentecost here is that establishes that before Christian Judaism came, Pentecost was celebrated as a feast of the covenant renewal of the people of Israel. So renew the covenant, they renew the vows, they renew themselves. It was mandatory to celebrate that. Now to do that, the feast it was also called a giving of the law at Sinai. So it was mandatory when they celebrate this covenant, they have to read Exodus chapter 19 at the Feast of Covenant. And then probably that became a kind of a tradition of Israel, that a century before Christ, this was practiced in this form, reciting Exodus chapter 19 and all the law and the covenant that were there at Sinai, they recite all the time. And that became a festival as a day of Pentecost. Luke was well aware when he wrote the Gospel, and he wrote the Luke Acts of the Apostles, where he refers of the Pentecost day. He refers of the establishment of the Pentecost with the giving of the law at Sinai. He was well aware, but he never gives an evidence of such tradition belief as he narrates about the pouring of the Holy Spirit upon people. This definite narration that Peter says about Joel prophecies in chapter 2, verse 28 onwards, the prophecy that was there. But as we read the scripture, it was on the 50th day after Passover. So you can understand when the Jews celebrated Passover, it was on the 50th day they celebrated Pentecost. Call it as a harvest festival, but also signifies the giving of the law, celebration of the renewal of covenant. The very significance of the Pentecost among the early Christians was very much there. It has 2 definite impacts. What we have read in Joel and what we have read in Acts of the Apostles, how the power of Holy Spirit came upon them, the true kind of effect that took place on the day of Pentecost, And we today as a church must know, because we need to practice. And these days when it is so coronavirus and pandemic is around the whole globe, whole world, we need to trust and depend upon this power of Lord Jesus Christ. Now here, the Spirit promised on the day of Pentecost was outpouring of the Spirit promised by God for the end time. Now things that are going to come to an end before that, this is very important event, Pentecost, that has to take place. It has 2 effects. It was charismatic and it was ecstatic. It is charismatic because it was magnetic effect was there, it was compelling, it was enigmatic, it was sort of making people to see, and they were shaken up with the power that was given, and they could not alienate that power away from themselves. They were glued so much with the power of Holy Spirit. It was ecstatic, means it was joy. They were overjoyed. They didn't know that joy has come so where they were not prepared for. They were overjoyed, they were ecstatic, they were delighted. It was euphoric kind of a thing.
some kind of euphoric kind of some thrill that took place into their life. And that thrill was out of control for them. They were so excited that they're getting something which they never had, and they were speaking to others something new to each other. With their parents of spirit, it was distinctive, it was very significant during that time. And it's very important. Matthew chapter 3 says something like this. Matthew chapter 3 verse 11. It says something like this. It says Matthew chapter 3 verse 11. I baptize you with the water of repentance, but he who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to be removed his sandal. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. A wonderful prophecy that is given on this part, that he will prophesy, he will work with you. Let's look to John chapter 7. John chapter 7 verse 8. John chapter 7. It's very interesting that the same prophecy was revealed at that time over there. Chapter 7 and verse 38 and 39. And it talks about the same thing, but John tells in his own way. Verse 30, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow river of living water. But this he spoke of the Spirit, who believed in him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. See, these prophecies that were told before came to fulfillment, and this happens. And Jesus foretells about the coming of the Holy Spirit. Paul tells what the Spirit does. Look at in Romans chapter 8 verse 9. It says like this: however, you are not in the flesh but in spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, but anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. How wonderful. Paul indwells the working of the Spirit, the work of the charismatic and aesthetic state of the Spirit working into the life of it. You cannot dwell unless until you have the Spirit of Christ in you. Now the Pentecost was charismatic. In what form? It was charismatic because Joel chapter 2 verse 28, the prophecy talks about that I will pour out upon the people. Now whole idea of prophesying and the whole idea of Holy Spirit coming upon the people, young people, the elderly people, all of them. And it tells in verse 28, it says, I will pour it out. It was stamped, it was impressed, it was embossed, it was engraved upon the Christian. And the talk that went on at that time was Holy Spirit. It was all about Holy Spirit. It was all about Holy Spirit. Let's look to Acts chapter 2 and verse 12. And it says, and they were come to amazement, were perplexed with one another. It's such a speaking, mighty deeds of God were working. Peter elaborate all that the Lord has done into their lives. Is so mightier. And what we read, the Spirit was poured out upon us. Call to worship, remember? We just started a worship, the first verse that I read, that the Holy Spirit has been poured out on you. Paul says in Romans chapter 5, verse 5. It was something that, in Acts 20 and verse 6, it is charismatic because they were so gripped, there was so much magnet in them, and they were so compelled and were enigmatic about each other, about the power of the Word, the power of the Spirit was holding them together. They started celebrating the anniversary of the Pentecost also. Acts chapter 20 verse 6 says that Paul was supposed to go past to Ephesus, and he would not have to spend time in Asia, for he was hurrying to go to Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. So that was a 1 year anniversary celebration of the pouring of the Holy Spirit. Paul went to Jerusalem to celebrate. That's charismatic. That's one is caught up into this great power of the Holy Spirit. It also, Pentecost also is called as an aesthetic. What is aesthetic about it? When you read Acts chapter 2, it talks about people experience of involving of a vision. People is experiencing sound of wind, like wind, tongues of fire, something like a glossolalia,
something like which is speaking in tongue, which is nonsensical and something which is invented speech, especially which is we cannot trace it. It's some type of schizophrenic thinking of a person, doesn't know what he or she is saying. But later the church sort of brought this language, whole language which came. People started understanding the language. They were recognizing the language. It is a language which is called glossolalia, but it was changed into understanding of the language, which in modern language we call it Pentecostalism. But in fact, what language they spoke, it was they understood each other when they were talking. That's the ecstatic view of the Pentecost. Charismatic and ecstatic. Totally caught up, being vision, experience the supernatural things working into their life. The first Pentecost resulted at this time, what Luke records, that the community was created, enthusiastic community was created. They came, they were loyal to each other. To the risen Lord, they were loyal. That Jesus is coming soon. They were very loyal, they were committed. They had a common experience of the Holy Spirit in their life. And when they have that, they together with one, enthusiastic together as one. No different enthusiasm, no different commitment. Committed in same experience of Holy Spirit in their life. And that's what we're looking for the church today as we worship. Same experience, same power of the Spirit working in them. And same way, going loyal to each other, growing together. This is the hour, friends, we're required to do. Acts chapter 3, verse 19-20. Peter emphasized this very act to the people when they were perplexed, when they were amazed, they were astonished. He told them, therefore repent and return, so that your sins may be wiped out, so that the times of refreshing may come. That's a prophecy. That is a prophetic utterance by Peter. It is not coming of the Spirit, but it was a fulfillment of the time of refreshing coming upon the people of God. And then he may send Jesus Christ, which is appointed for you. So then the coming again of Christ is prophesied on the day of Pentecost. So the Pentecost was basically a community which hasn't only experienced the power of Spirit in their life, which has not only become charismatic and aesthetic in their life, but also being together to wait expectantly the coming of Christ with this experience of Holy Spirit in their life. Now, when we look to the Old Testament thinking, how Joel prophecy comes in this way, when 2:28 says, I will come after this, that I will pour out my Spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Now what is this? Peter is trying to bring this in when he was talking on the day of Pentecost. Well, it is sort of, according to Jewish expectation, the Spirit was experienced as a prophetic spirit. According to Joel 2:20. It was prophetic. It was foretold that will happen. But what Peter did was, he spoke this as is not a privilege of few chosen people of Jews. It was a privilege of all. It is not few who have prophesied that their daughters and their children are few chosen people do. It will be for all. Peter saw a privilege for all, not a prerogative of few. That is Jews, or probably the chosen Pharisees or rabbis. But here, the reading of chapter 2, verse 17, 18, and 38 and 39, what Peter was saying, establish a link between Pentecost and covenant renewal. It brings up a link. It's the giving of the law, which will prompt the first believer to interpret the experience of the Holy Spirit are fulfilled. And it's a fulfillment of the promise of the new covenant. As the law prophesied it in Old Testament, that these law, as the Spirit has come, is written upon their heart. Old Testament full of that. This giving of the law, coming of the Holy Spirit, Peter bring it together, these prophecies. And not a prerogative of a few, but to everybody, the law and the Spirit and Jesus will be upon their heart. Deuteronomy chapter 30, verse 6 says like this, more of the Lord your God will circumcise your heart. I repeat again, moreover, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendant, to love the Lord your God with all your heart
and with all your soul and with all your mind. That's where the Old Testament prophecies and the New Testament, where His Spirit is poured on the day of Pentecost, both these come together, that Lord wants to dwell in our heart. He will write it down, and that's not by anybody, by ink or by pen or by word, by the Spirit. It will be written upon our heart. And that's the emphasis. That's the charismatic. That is the aesthetic that is there upon us in our life. Now, when this is happening on this day, we are also reminded of very important thing. When you talk about the gift of language, and we talk about the gift that God has given to people, and you can understand and that grow. How this has happened? Why it has to happen on the day of Pentecost? Why the Holy Spirit would talk about the tongues by bringing people together and understanding together? Why that was needed? When already in Johannine Gospel, if you see in John's Gospel chapter 20, He breathed on them and the disciples received the Holy Spirit. They had the Spirit in them. The Pentecost was already celebrated and disciples were filled with Holy Spirit. Here it is reminded us a very important aspect of life. It talks about Genesis chapter 11, verse 1 to 9. It's very interesting, When you look to Genesis 11, it talks about the Tower of Babel. What happened at the Tower of Babel? I think, friends, you will remember what the king wanted to do. He wanted to reach higher than God. He wanted to make a pillar of bricks and cement so high, trying to become mightier than God. And God saw that these people are rebelling. They want to become together in one language. So God confused them and divided them in the language. Because these people were coming together against God through language. Because in language they were one. One of the greatest danger that man do in one language, try to please his own people with his one language and be in one language. But here, at the day of Pentecost, the difference has been made by God. The language which was given was to be spoken by everybody. The Spirit would be upon the heart, and everybody will know from the heart the love of Christ. They will know with the Spirit the Word of God. It's very interesting to see that happens over here. It says God's judgment at Babel scattered the people. God judged them. He scattered them. But at the day of Pentecost, it was united as believer in the Spirit. All who believe. 3,000 people started from 120, became 3,000. They all believe. People increased. They know the language. They know Christ. They know the power of the Spirit started growing. At Babel, people are unable to understand each other. They went on their own language group and they dispersed, scattered around. But here, people heard God's praises and understood what was said. Everyone understood what God is doing on the day of Pentecost. At the Tower of Babel was the scheme designed to praise men, made in the name of men. But at the day of Pentecost, it was brought to praising of God, our Lord Jesus Christ. Not men, but Jesus. That's the Pentecost. All will draw nearer to Him, to Jesus Christ. The building of Babel was an act of rebellion. It rebelled against God. The unity together created power to rebel against God. But on the day of Pentecost, it was a ministry of humble submission. We all submit to vision and ministry of God. We humbly submit to God. What a contrast. What a kind of people that believe. And what a kind of things that we have. One of the significant reasons that why we celebrate Christmas here, this Pentecost, that Spirit has been poured out. Simeon? You remember Simeon? Yeah? It's given Luke chapter 2 verse 25. What happened to Simeon the prophet? At Jerusalem called Simeon. He was righteous but devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. So beautiful. It was there that the people of early faith had the coming of the Spirit. They had vision. They have been told what is happening to them. We talk about Cornelius and his people, and all together what happened in Acts chapter 10 verse 44.
Peter and John placed their hand and on them, Cornelius, while we see in Acts chapter 10 verse 44, that Peter saw still speaking with these words, and Holy Spirit came on all, and they spoke in tongue and prophesied. How lovely. At the company of Cornelius, the Holy Spirit pouring was experienced not only with Peter and John, but with everybody who hears the word of God, because it submits us to the ministry of Jesus Christ. That's what's happening. And Peter was still speaking. The Holy Spirit came upon him, and they heard his message. What happened to Ephesians believer? We read through Acts. This is what happened. Ephesians. What happened, Paul? It was in chapter 19 in Acts. We see in verse 6 that Paul placed his hand on them, and Holy Spirit came upon them. Putting hand and Spirit coming, and they all spoke in tongue, and they prophesied. The whole prophetic utterance became a mandate on the celebration and the power of the Pentecost in the church at early days. And that's very important. It happens. So tongues led the people to know the gospel. I would say the tongues led to know the whole gospel for the whole world. And that's what God wants to speak to every person. It's our own language. God wants to give His salvation message for Jesus Christ, of Jesus Christ, to everybody. The Acts of the Apostle is a worldwide evangelization. Anybody do not know the gospel, go to the Acts of the Apostle. How you will know how Jesus Christ has been proclaimed in different areas. Henry Martin said, the Spirit of Christ is the spirit of mission. And the nearer we go to Him, and more intensely missionary we become. Apparently the sound of the wind that drew people to the temple where believers are gathered, it was the praise of the believers. They really captured their attention. The Holy Spirit really captured their attention. The careless listener mocked. Isn't it very true? They mocked them. Since morning they've been drinking wine, that they were mocking them. Accused them of being drunk. Others sincerely found what was going on. That's very, very important, friends. People will accuse you if you follow Jesus Christ. People will accuse you why you believe in prayer. People will accuse you for having a gifts to serve the Lord through the Holy Spirit in your life. Now what the church today is to do when the prophecies come fulfillment, when the Acts of the Apostle has revealed the truth of the coming of the Holy Spirit, where John's Gospel told his Johannine community, when he write his Gospel, telling the Johannine Pentecost, the Spirit of the Lord is upon you, and He breathed it on them. Go, bless them as I powered you. Where Luke Gospel and Luke in his letter to the Acts of the Apostles says, after fulfilling of the Jewish prophetic understanding and prophecy belief, he revealed the power of the Spirit. I think today, with the Holy Spirit coming, we need some very important thing. We are not the custodians of the Holy Spirit. That's the wrong message people give. We have received this gift of the Holy Spirit to work it out, to give it out. What to give it out? The gospel message, the message of Jesus, the life of Jesus, the death of Jesus, the resurrection of Jesus, the ascension of Jesus to the lives of the people. There we have life. I think today the church need to very focus in the life and work of Jesus Christ. The very purpose of His healing, the very purpose of giving discourses. The church has to stand with this. It's very, very important, friends. It also talk about today for the church, the coming of the Pentecost today celebration, that we must take our faith walk seriously. Don't take it for granted. It's very important. Let's be serious when we pray. Let's mean it, what we pray with the word. Today I always say, praying for so many people. I think nowadays only prayer works. Anybody need any consolation? I think the gift of Holy Spirit works only. There's nothing else will work. If the word of God is written and without Spirit you have, it will not work. If the word of God you believe and you have faith, you allow the Holy Spirit to come, empower you to work in the midst of the people. Today, we are in the midst to celebrate Pentecost. Then the whole world is perplexed, who is sad, who is depressed, who is not, there's no hope in them, friends.
We are the people of hope. We are the restored people of Jesus Christ. And we are the people to carry the refreshing time of Jesus which is going to come. And if you are not going to do, you're in the hand of the peoples of the world who are distressed, frustrated, anxious, worried, and with no hope. Let us, people of God today, let us the amazement continue of the Pentecost in our life. Let the marvelous work become a witness in our life. Let us all get perplexed, excited. Let's get charismatic. Let's become ecstatic about this. Let us all grow in the Spirit of Lord Jesus Christ. The Spirit heals. The Spirit works. The Spirit testifies. And the Spirit selects His people to work for His glory. It guides in all truth. The Spirit controls all our actions. If you submit, it will control all our actions. Spirit directs every person, every leader. Only the Spirit can guide and direct us. It creates obedience to the submission to the Spirit. We learn to remain honest and obedient in the body of Christ. Let us work together. Let us pray together. Let us hope together. Let us bring that time of refreshment into the lives of people who are depressed, who are frustrated, who are downtrodden, who are losing hope. Because this world will make us to lose hope for our living. These are the days of refreshment. These are the days that the Spirit of God is working. These are the days of the Pentecost. Refreshing, empowering, fulfilling, and prophetic. Let's have this hope in Jesus Christ. Let's pray. God of peace and God of love and God of Spirit, pour your Spirit upon your people that they love you and they remain Pentecost in their life with a living faith in Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through Him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day He rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May the Holy Spirit breathe new life into you and set you on fire with the love of God.
पाक रूह तुम्हारे अंदर नई जिंदगी का दम फूके और तुम्हें खुदा की मोहब्बत की आग भड़काए। And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us and remain with us now and forever. Amen. Spirit of life in this new dawn, give us the faith that follows on, letting thine own prevailing power fulfill the dream of this Zion. Spirit creative, give us light, lifting the reverend bliss of night. Touch the waters with spirit hand, and make us souls that understand. Spirit redeeming, give us grace when crucified to seek thy face, to read forgiveness in thine eyes, today with thee in paradise. Spirit consoling, let us find thy hand when sorrow's dream was blind. In the great valley, let us hear thy silent voice blow high and near. Spirit of love at evening time, when weary feet refuse to climb, give us thy vision eyes that see beyond the dark, the dawn and eve. Amen. आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जब हम उसके नज़दीक बैठ सकते हैं और उसके वचन पर मनन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवनों में दी है। धन्यवाद करते हैं बीते हफ्ते आपने हम सबको संभाला, हमारी मदद की, सहायता की, हमें स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, तमाम खतरों से, परेशानियों से, कष्टों से बचाकर रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। इसलिए हम आपका शुक्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जबकि हम आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होना, हमारी मदद करना, सहायता करना, पवित्र आत्मा का दान हमें से प्रत्येक को देना, ताकि हम वचन की गहरी बातों को समझ सकें, अपने जीवनों को इस वचन के प्रकाश में जांचने वाले हो सके। प्रभु जी, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज 31 मई है, मई का आखिरी दिन है और आज बड़ा ही विशेष दिन है। आज विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज का दिन जो है हम पेंटिकॉस्ट डे के या पेंटिकोस्ट के नाम से, दिन के नाम से मनाते हैं। और ये चर्च के या हमारी कलीसिया के जो कैलेंडर होता है साल भर का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। हालांकि हम लोग को इसको त्योहार की तरह नहीं मनाते हैं, जैसे कि हम लोग ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर क्रिसमस मनाते हैं, बट
अगर आप गहराई में जाएं तो ये एक ऐसा पर्व है या ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारे मसीही जीवन में, हमारे विश्वास में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट होता यह है कि कई चीजें हम ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट पेंटिकॉस्ट का दिन अपने आप में हमारे मसीही जो कलीसिया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि हम लोग अब इस टाइम घर में ही हैं, हम इस बार ना गुड फ्राइडे, ना ईस्टर पे, मॉन्डी थर्सडे, किसी भी दिन हम लोग चर्च नहीं जा पाए, खाली गिरजों में नहीं जा पाए। बट अगर वैसे देखें तो हमारा जो चर्च कैलेंडर है वो बड़ा ही इन पिछले दिनों में काफी महत्वपूर्ण ये पर्व थे जो निकल गए। और गुड फ्राइडे, ईस्टर जैसा मैंने कि आपको बताया, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को मनाया। और हम लोग सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं और पापों से हमें क्षमा मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि प्रभु यीशु मसीह ने जान तो दी बट वो तीसरे दिन जी उठा। और जो वो तीसरे दिन जी उठा तो उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने अनंत जीवन के लिए मार्ग को खोल दिया, रास्ते को खोल दिया, दरवाजे को खोल दिया, और उसने शैतान और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। तो ये जो हमने अभी पिछले दिनों में, पिछले महीने में इन सब चीजों को याद किया है, मनाया है, मनन किया है। और आज जब हम 7वें इतवार में आते हैं या 7th संडे में आते हैं आफ्टर द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के पर्व के पश्चात आज 7वां रविवार है। और 7वां रविवार यानी कि ईस्टर के बाद आज 50वां दिन है, जिसको हम लोग पेंटिकॉस्ट का मतलब ही 50th होता है, 50वां होता है। पेंटिकोस्ट मतलब 50वां। और ये जो पेंटिकॉस्ट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड आता है पेंटेकोस्टे से, जिसका मतलब 50th होता है, जैसे मैंने कि आपको बताया। पेंटिकॉस्ट जो है वो फसह के पर्व के बाद 50वां दिन जो होता है उस दिन उसको मनाया जाता है। यदि आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 15 से लेके 21वीं आयत तक पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ूंगा नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। वहां पर हमें इस जो फेस्टिवल होता है या पर्व होता है इसको मनाने की पूरी विधि वहां पे परमेश्वर के द्वारा बताई जाती है। और फसह का पर्व कैसे, मतलब ये कैसे मनाया जाता है। और यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते हैं तो इसी दिन, इसी पर्व के दिन जो था, पवित्र आत्मा जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो करीब 120 उसके पीछे चलने वाले लोग थे उन पर डेला गया था। यरूशलेम की बात है ये। और कहा जाता है और माना भी जाता है, और बात सही भी है कि इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। पेंटिकॉस्ट वाले दिन कलीसिया का बर्थडे, या कह सकते हैं चर्च का बर्थडे था ये। तो वही मैं आपसे शुरू में कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है चर्च के कैलेंडर में। हालांकि हम लोग उसका इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट वी नीड टू गिव इट, हमें उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। जो एक सामान्य मसीही होता है और जो कलीसिया है वो जो है वो कलवरी और पेंटिकॉस्ट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असमंजस में रहते हैं। असमंजस में क्यों रहते हैं कि वो लोग कलवरी पर जाते तो हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, पार्डन के लिए जाते हैं, बट वो पेंटिकॉस्ट में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेने के लिए नहीं आते हैं। वही मैंने आपको कहा ना कि हम लोग कई चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि लोग कलवरी पे माफी के लिए तो जाते हैं, बट पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए नहीं आते हैं। बेथलेहम का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कलवरी का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे लिए है, बट पेंटिकॉस्ट का मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है। और ये जो मैंने आपको अभी जो स्टेटमेंट्स बोले हैं, जो अभी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, वो हमारी जो पवित्र आत्मा को समझने की या उसके कार्य को समझने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाता है। बट क्या होता है कि जो एक साधारण एवरेज क्रिश्चियन होता है या साधारण मसीह होता है, वो उन इफिसियों की तरह होता है जिनसे पौलुस जो है वो प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी 2री आयत में बात करता है। उनसे पूछता है कि जब तुमने विश्वास किया था तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया था? और वो उसको क्या जवाब देते हैं, इफिसी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं, हमें किसी ने बताया भाई ये पवित्र आत्मा क्या होता है। कई मसीहों को ये समझ में नहीं आता है, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो उनको समझ में नहीं आता है, ना वो उसकी सामर्थ्य को अपने व्यक्तिगत जीवनों में कभी इन चीजों को महसूस करते हैं। जेबी फिलिप्स जो थे एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात को कही। उन्होंने कहा व्हाट वी नीड टुडे इज अगेन द विंड एंड फ्लेम ऑफ पेंटिकॉस्ट। मतलब आज के दिन में, इस करंट सिचुएशन में, आज की सदी में मुझे और आपको उस
पेंटिकॉस्ट की आग की जरूरत है। एक और प्रचारक ने बड़ा अच्छा कहा कि जो पेंटिकॉस्ट होता है वो कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वो कोई समूह नहीं है, वो एक अनुभव है जो हर खून खरीदे, मसीह के खून खरीदे बच्चे को या बच्ची को उसको महसूस करना जरूरी है, उसको अपनाना जरूरी है। और हम लोग बड़े प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग बड़े सौभाग्य वाले लोग हैं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा को और भरपूरी से लोगों के बीच में ढूंढेल रहा है। हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं मोबाइल में, टीवी में, ना जाने कहां कहां, जहां लोग दुआओं में लगे हैं, वचनों को प्रचार कर रहे हैं, इवेंजलिज्म हो रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वो सदी है जहां पे और भरपूरी से पवित्र आत्मा को ढूंढेला जा रहा है। और ये जो है ये एक अनुभव होता है जो उद्धार के बाद मुझे और आपको, जो बपतिस्मा जब मैं और आप लेते हैं, ये मैं और आप उसको लेते हैं। जो लोग बचाए जाते हैं उनके पास पवित्र आत्मा है। When someone is saved, the Holy Spirit puts him into the body of Christ. जब हम बचाए जाते हैं तो यही पवित्र आत्मा मुझे प्रभु यीशु मसीह के शरीर या बॉडी में डालता है, उसका एक हिस्सा मुझे बनाता है। बट ये भी होना जरूरी है कि मैं और आप उस पवित्र आत्मा से भर जाएं और हमारे अंदर आत्माओं को जीतने की सामर्थ आनी चाहिए। जो द सेव्ड पीपल आर नॉट ऑलवेज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जो लोग बचाए हुए जाते हैं, जरूरी नहीं होता कि उनके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए, बट होता नहीं है, वो होता नहीं है। बचाए हुए लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर पवित्र आत्मा होता नहीं है। पेंटिकॉस्ट का प्रॉमिस क्या था, उसका उस दिन का वायदा क्या था? उसका वायदा ये था कि पवित्र आत्मा जो है वो चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, उस पर उंडेला जाएगा, उस पर उंडेला गया है। प्रेरितों के काम उसके पहली अध्याय उसकी 8वीं आयत में ये तो लिखा है कि तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे दूर दूर तक गवाह ठहरोगे। मुझे और आपको उस पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। आज की जो कलीसिया है, बड़ी दुख की बात है, आज की जो कलीसिया है वो उस सामर्थ को खो चुकी है या खोती जा रही है। हम लोग चारों तरफ अपने देखते हैं, मोस्ट जो जितने भी कई डिनोमिनेशन जैसे हो गए जो सिर्फ सोशल क्लब बन के रह जाते हैं। लोग सिर्फ एक दूसरे से मिलने जुलने आते हैं और कुछ नहीं होता है। और जो कार्य प्रभु का होना चाहिए, जो परमेश्वर का कार्य कलीसियाओं में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। शमशून के जीवन को, सैमसन के जीवन को बाइबल में देखते हैं कि उसको पता ही लगा, उसको समझ में नहीं आया कि वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा था उसके पास से ले लिया गया है। वो एक उसके पास था, शरीर तो था, बट सामर्थ उसके पास नहीं रह गई थी। हम लोग सब जानते हैं शमशून की कहानी में क्या हुआ था। जब उसके बाल काट दिए जाते हैं तो वो अपनी गलत आदतों की वजह से उस सामर्थ को जो परमेश्वर की ओर से दी जाती है उसको खो देता है और फिर वो एक हारी हुई जिंदगी को जीता है, अंधा हो जाता है। वो उसको जो फिलिस्ती होते हैं वो उसको अपना गुलाम बना लेते हैं, उसके दुश्मन उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। यही मेरे और आपके बीच में आजकल हो रहा है, यही मेरे और आपकी कलीसियाओं में हो रहा है कि लोग हम शैतान के गुलाम बन के रह जाते हैं। बट आज का जो दिन है, जब हम पेंटिकॉस्ट के दिन को मनाते हैं, इट्स अ डे ऑफ रेस्टोरेशन। दोबारा से हम उस आत्मा के अभिषेक को या आत्मा की सामर्थ को पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये आत्मा उसकी कलीसिया में दोबारा आके राज्य करे, दोबारा उसकी कलीसिया में उसके लोगों के बीच में राज्य करे। यदि हम पेंटिकॉस्ट के पावर्स को देखते हैं, सामर्थ को देखते हैं, सबसे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा से क्या मिलता है? पहली चीज जो हमें मिलती है, 3 चीजें बहुत जल्दी जल्दी हम उसको देखते हैं। पहली चीज जो मिलती है, हमें आराधना करने की सामर्थ मिलती है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें आत्मा से और सच्चाई से जो है वो आराधना करना सिखाता है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा उद्देश्य पृथ्वी पर भेजने का परमेश्वर का ये है कि वो उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हमारा कार्य ये नहीं है कि हम हर संडे चर्च में जाएं, बैठ जाएं, शांति से कुछ ना करें और सिर्फ सामने देखते रहें। जब गाना गाने की बारी आए तो धीरे से उठे, मुंह में कुछ थोड़ा सा बुदबुदाया और फिर बैठ गए। फिर 15-20 मिनट का एक सरमन सुना या संदेश सुना और कुछ लगा कि हाँ कुछ धर्म हमें मिल गया है, कोई रिलीजन हमें मिल गया है, और अपने घरों को हम वापस आ जाते हैं। कभी कभी तो चर्च में बैठ के जागना या आंखें खोल के बैठने बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा और आपका जीवन जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा की जो सबसे बड़ी सामर्थ जो मेरे अंदर आनी चाहिए वो ये है कि मैं आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करूं। मैं कोई मूर्ख दर्शक ना बनूं, स्पेक्टेटर या ऑब्जर्वर बन के चर्च में ना बैठूं, आराधना ना करूं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से भर करके परमेश्वर की आराधना करना
शुरू करूं। जो रियल वर्शिप होती है, जो असली आराधना होती है, वो चाहती है कि मैं और आप उसमें आत्मा और सच्चाई से होकर के उसमें भाग ले, और ये हम अपने आप से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ही है जब मेरे अंदर आता है, वो हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सके। यही पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को उठाता है, वो मेरे दिल को छूता है कि मैं दिल से और हृदय से अपने परमेश्वर की आराधना करने वाला हो सकूं। तो आत्मा और सच्चाई से जो है, सबसे बड़ी चीज यह है कि आत्मा और सच्चाई से पवित्र आत्मा मुझे देता है कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। उसके बाद वो मुझे आगाह करने की सामर्थ्य देता है, दूसरों को, दूसरे लोग जो नहीं बचाए हुए हैं उनको बताऊं कि अगर अपने जीवनों में तौबा नहीं करोगे तो पाप में मरोगे, पाप में फंसोगे और आग में डाल दिए जाओगे, नरक की आग में। हाउ इन द वर्ल्ड कैन पीपल क्लेम टू लव गॉड? कैसे मैं और आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसकी दूसरी संतानों को मैं अपने सामने नाश होते देखूं? यदि मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो आगाह करने की जो सामर्थ्य है, लोगों को वार्न करने की जो सामर्थ्य है, वो मेरे अंदर आएगी। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन इस होली स्पिरिट को या पवित्र आत्मा को भेजा गया, इन्हीं चीजों के लिए भेजा गया है। उसका दूसरा बड़ा कार्य है कि लोगों को आगाह करूं कि अपने पापों से आजादी को पाओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एग्जाम्पल, अगर हमारे पड़ोसी के घर में आग लग जाती है तो मैं घर में बैठ के उसके लिए दुआ नहीं करूंगा कि हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे, इसको थोड़ा सा आग की बदबू आने दे ताकि ये उठ जाए और फिर उस आग को बुझा ले और कुछ ना कुछ अपने लिए इंतजाम करे। बल्कि मैं अपना दरवाजा खोल के भागूंगा, उसके दरवाजे को पीटूंगा या चिल्लाऊंगा और कहूंगा भाई अपने आप को बचा, अपने परिवार को, अपने घर को बचा, तेरे घर में आग लग गई है। उसी तरह जब मैं आत्मिक जीवन में देखता हूं तो मुझे यही करना जरूरी है कि मैं जब अपने सामने ऐसे लोगों को नाश होते देखता हूं तो मुझे उनको आगाह करना जरूरी है। और तीसरी और अंतिम चीज, जब पवित्र आत्मा की सबसे बड़ा जो उसका एक और कार्य है वो यह है, तीसरा कार्य है कि मैं उसका गवाह बनूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का बना बनूं। जब मेरे और आपके अंदर वो पवित्र आत्मा आता है, जब वो कार्य करना शुरू करता है तो हमारे अंदर एक बोल्डनेस आती है, हमारे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर जो है करेज आता है, हमारे अंदर हिम्मत आती है, ताकत आती है। हम सारी शर्म भूल जाते हैं और परमेश्वर की बातों के गवाह बन जाते हैं। और सिर्फ बातों से ही नहीं, अपने जीवन के द्वारा, अपने एटीट्यूड या व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा मैं गवाही देता हूं। मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि हम अपने नामों के कारण या अपने सरनेम के कारण मसीही ना कहलाएं, बल्कि अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा मसीह कहलाएं, अपने प्रेम के द्वारा मसीह कहलाएं। ये मेरे और आपकी गवाही है। हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, हम चलता फिरता पावर हाउस है इस दुनिया के अंदर, जिसको देख करके लोग सामर्थ को और हिम्मत को प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 38वीं आयत में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने मुझे और आपको तरीका बता दिया है। तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं तो ये वायदा है वचन में कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए ये चीज अवेलेबल है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं लूका उसके 11वें अध्याय की 13वीं आयत में कहते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं अपने बच्चों को पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगते हैं? क्यों नहीं देगा? आज मैं और आप अपने आप से सवाल पूछे, यदि मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगूंगा आज के पेंटिकॉस्ट वाले दिन, तो मुझे इस चीज को क्यों नहीं देगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें सामर्थ मिलती है कि हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री कहलाएं। बट जब हम परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करते हैं, वो पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, तो हमें सामर्थ मिलती है कि हम उसी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसकी संतान बन जाते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो हमें सामर्थ मिलती है कि उसी प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा करना, अपनी आराधना के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा, लोगों को आगाह करने के द्वारा हम उसकी सेवा को अंजाम देने वाले हो सके। लेट अस नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल वी रिसीव द प्रॉमिस। अपने जीवन में चैन से ना बैठे जब तक हम इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त ना कर ले। आइए अपने हाथों को खोल के परमेश्वर से मांगे, हाथों को उठाएं, अपने हाथों को फैलाएं और परमेश्वर से इस पवित्र आत्मा को मांगे। हाथ खोल ले पूरे और पवित्र आत्मा को मांगे, विश्वास से मांगे कि हाँ परमेश्वर मुझे वो आत्मा दे दे जो तू मुझे देता, मैं उसको लेता हूं, तू अपनी आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं तेरे कार्य को अंजाम देने वाला हो सकूं, ताकि मैं दिल से तुझे प्रेम करने वाला हो सकूं। आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए। प्रभु जी, आज वो दिन है प्रभु जी जब कलीसिया की स्थापना हुई, आज कलीसिया का जन्म हुआ प्रभु जी।
होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन सब पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलिए प्रभु, जैसे आपने उस दिन उंडेला था, ताकि प्रभु जी लोग आपकी आत्मा को ग्रहण करें, प्राप्त करें प्रभु जी, और आपकी गवाही का कारण ठहरे प्रभु जी। आराधना जो करते हैं आत्मा और सच्चाई से आपकी करने वाले हो सके, लोगों को जो खोए हुए हैं, जो आपकी खोई हुई भेड़े हैं प्रभु जी, उनको आगाह करने वाले हो सके प्रभु जी। मदद करे, सहायता करे, हम सबके साथ हो। अपना पवित्र आत्मा हम सबको दे। आपका वायदा है कि जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं और आपके पीछे चलते हैं, जैसा पतरस ने कहा है, तो पवित्र आत्मा का दान हम सब पाएंगे। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में प्रभु जी ढांपते हैं, और इस प्रभु जी प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।